मोस्ट इम्पोर्टाट चैप्टर इंडियन एक्ट्स जो गुणिक रही आमर कन्स्टिट्यूशन इवोल्यूशन रे हेल्पफुल रही 1773 रेगुलेटिंग एक्ट आरंभ कर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 पर्यंत आम डिस्कस करवा। तो आम चैनल जो मैंने नुआ अच्छा चैनल को सब्सक्राइब करूँ एवं डिस्क्रिप्शन लिंक रही टेलीग्राम रे जॉइन करूँ जहाँफल आपड़ प्रथम आम भिडर लिंक टी पाइपर। तो चलतु स्टार्ट करवा इंपोर्टेंट क्वेश्चन गुड़ी को। Under which of the following act Legislative Council of India received the power to discuss the budget? Option A 1861, Indian Council Act 1892, Indian Council Act 1909, Government of India Act 1919। तो राइट आंसर कौन हो? ऑप्शन ए बी सी डी। तो राइट आंसर हो कौन ना इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 ए बजेट्र डिस्कसन होता एवं आउ कौन होता ना आमर इंट्रोड्यूस कराइला कौन ना लिमिटेड फॉर्म ऑफ इलेक्टोरल रिप्रेजेंटेशन। आमर इलेक्टोरल रिप्रेजेंटेशन गुड़ी को एठार कौन होता ना इंट्रोड्यूस कराइला। आउ कौन होता ना एक्सपांड कराइला लेजिस्लेटिव काउंसिल रोल्स गुड़ी को एवं फंक्शन गुड़ी को एक्सपांड करा जाइथिला। देन जिबा ऑप्शन ए काउंसिल एक्ट 1861 ए एक्ट कौन होता रिस्टोर करा होता आमर लेजिस्लेटिव पावर टू बॉम्बे एंड मैड्रास। लेजिस्लेटिव पावर गुड़ी को रिस्टोर करा होता क्या दिया ना बॉम्बे एंड मैड्रास। देन जिबा इंडिया काउंसिल एक्ट 1909 मर्ले मिंटो रिफॉर्म को हम कही था मर्ले मिंटो रिफॉर्म। तो ये एक्ट कौन होता 1909 एठारे मुस्लिम मानक पई सेपरेट इलेक्शन करा जाइथिला। यही एक्टर मध्य आम मिंटो को मध्य फादर ऑफ कम्युनाल कह जाए। ठीक अच्छे। तो यही एक्ट्रे सांप्रदायिकतार जनक मध्य आम मिंटो को कही था। सेपरेट इलेक्शन होता कहार ना मुस्लिम मानकर एवं आउ कौन होता ना आमर जो लेजिस्लेटिव काउंसिल रही तार जो सीट्स गुड़िक थिला बा मेंबर थिले 16 टू 60 कर दिया जाइथिला। 16 टू 60 कर दिया कि एक्ट्रे 1909 एक्ट्रे। देन जिबा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ए एक्ट को आउ कौन मध्य कहा जाए मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड। मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड ये एक्टर कौन होता ना महिला मान प्रथम भोट देवार अधिकार दि जाता कौन ना 1919 एक्ट्रे। भाइस रे किए थे चेम्सफोर्ड, स्टेट सेक्रेटरी किए थे मॉन्टेगू। ठीक अच्छे। तो केबे होता ना 1919 रे। आउ कौन कौन होता आउ कौन कौन होता ये एक्ट्रे आउ कौन होता एटारे आमर डार्ची सिस्टम एटार इंट्रोड्यूस कराइला क्यों एक्ट्रे 1919 एक्ट्रे। तो जी नेक्स्ट क्वेश्चन है The Indian Council Act 1892 increased the functioning of the Legislative Council. The council was given the power to discuss the budget but not the power to vote. The act permitted addressing question to the executive with prior notice of 6 days but the power to ask supplementary questions was not given. Which of the following act provided for commons representation in British India? Option A Indian Council Act 1892, Option B Minto Morley Reforms 1909,
ऑप्शन सी मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 तो यार राइट आंसर कौन हो ऑप्शन ए इंडियन काउंसिल एक्ट पार्लियामेंट रिफॉर्म मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 तो राइट आंसर हो कम्युनाल कम्युनाल देछि माने आमे पार्लियामेंट रिफॉर्म रे 1909 देन देखिबा आमर इंडियन काउंसिल एक्ट 1890 कौन होता ना बजेट रो इंट्रोड्यूस करा होता बजेट देन मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड 1919 रे हम डिस्कस करजे कौन होता एठार आमर 6 जन भाइस रे एग्जीक्यूटिव काउंसिल रो मेंबर थिले क्यों माने ना इंडियन माने 6 जन मेंबर थिले इंडियन एग्जीक्यूटिव काउंसिल रो इंडियन मेंबर थिले आउ कौन होता एठार आमर बाइकैमराल लेजिस्लेचर होता बाइकैमराल लेजिस्लेचर ठीक अच्छे आउ कौन कौन होता इंट्रोड्यूस कराइला डार्ची सिस्टम आउ कौन होता डार्ची सिस्टम डार्ची आउ कौन होता ना एस्टाब्लिश कराइला कौन पब्लिक सर्विस कमिशन ए एक्ट रे पब्लिक सर्विस कमिशन नेक्स्ट क्वेश्चन लिखि एनालिसिस कर दवा डिटेल यहाँ पर देन आउ कौन रहा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ए एक्ट को मध्य हमर मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कुआ जाए मिनी कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कुआ जाए तो राइट आंसर कौन हो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट प्रोवाइडेड फॉर कम्युनिस्ट रिप्रेजेंटेशन इन ब्रिटिश इंडिया तो पार्लियामेंट रिफॉर्म्स केवे 1909 मसीहा देन जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन The Indian Council Act 1909 introduced a separate electoral for communal representation. The Act of 1909 was associated with answer कौन ऑप्शन ए introduced a separate electorate, ऑप्शन बी decentralization, ऑप्शन सी Dyarchy, ऑप्शन डी legislative council तो राइट आंसर कौन हो पूर्व क्वेश्चन डिस्कसन करिजे इंट्रोड्यूस सेपरेट इलेक्टोरेट कि मानक पई मुस्लिम मानक पई डिसेंट्रलाइजेशन को एक्ट रे हमर हितला 1861 एक्ट रे जोटा रे हमर फास्ट पावर दिया था असेंबली लेजिस्लेटिव काउंसिल में बॉम्बे एवं मद्रास लेजिस्लेटिव पावर दिया था क्या बॉम्बे एवं मद्रास क्यों एक्ट रे 1861 एक्ट रे देन डार्की क्योंटा रे इंट्रोड्यूस कराइला ना 1919 मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड एक्ट रे देन लेजिस्लेटिव काउंसिल क्योंटा इंट्रोड्यूस होता क्यों एक्ट रे लेजिस्लेटिव काउंसिल होता ना बॉम्बे एवं नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस एवं पंजाब क्यों एक्ट रे 1861 एक्ट रे 1861 एक्ट मध्य होता क्योंठारे होता ना बॉम्बे एवं नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस एवं पंजाब बॉम्बे एवं नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस एवं पंजाब कौन होता एस्टाब्लिश न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर बेंगल नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस एंड पंजाब क्योंकि लेजिस्लेटिव काउंसिल 1861 एक्ट रे डार्की होता 1919 डिसेंट्रलाइजेशन 1861 रे इंट्रोड्यूशन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरल क्यों एक्ट रे 1909 देन जो नेक्स्ट क्वेश्चन the question jiba by which of the following acts was the federal court in India created option A Indian Council Act 1861 option B Government of India Act 1909 option C Government of India Act 1919 option D 1935
तो राइट आंसर कौन हो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 यहाँ हूँ गोटे मोस्ट इम्पोर्टाट एक्ट आमर जोटा जो आमर बहुत सारा जिनस गुड़िक आडप्ट कराइला और इम्प्लीमेंट कराइला कौन कौन होता एमर बाइकैमरालिज्म इन 6 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस आम जो 11टी प्रोविंसेस रही मध्य छटा प्रोविंस रे कौन होता बाइकैमरालिज्म एस्टाब्लिश कराइला आउट ऑफ 11 एस्टाब्लिश कराइला 6टारे आउट ऑफ 11 6टार आमर बाइकैमरालिज्म एस्टाब्लिश होता देन आउ कौन होता हाँ जो फेडरल कोड होता केबे होता ना 1937 रे फेडरल कोड केबे होता 1937 रे आउ कौन होता आमर एस्टाब्लिश कराइला कौन ना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये एक्ट रे आरबीआई मध्य ये एक्ट रे आसतिला आउ कौन होता ना जॉइंट पब्लिक सर्विस कमिशन बा सर्विस कमिशन पब्लिक सर्विस कमिशन जॉइंट जेपीएससी तो नेक्स्ट जीवा ऑप्शन सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड चेम्सफोर्ड ये एक्ट कौन कौन होता इंपोर्टेंट जिन गुड़ी मन रखा कौन होता यही एक्ट रे ना बाइकैमराल लेजिस्लेटर गुड़ी को अपर हाउस और लोअर हाउस रे एस्टाब्लिश कराइला क्यों एक्ट रे 1919 मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड एक्ट रे बाइकैमराल अपर हाउस एवं लोअर हाउस रे एस्टाब्लिश कराइला बाइकैमराल ठीक अच्छे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 तो ये आमर कौन मर्लेमेंटो रिफॉर्म मुस्लिम मानक अलग निर्वाचन करिवार सिस्टम यहीटार इंट्रोड्यूस कराइला तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 कौन होता आमर जो आमर पोर्टफोलियो गुड़िक रोचे केंद्रीय स्तर में से गुड़ को इंट्रोड्यूस कराइला एवं यही एक्ट अनुसार आमर हाईकोर्ट एक्ट बा आईपीसी इंडियन पेनल कोड आसला तो हाईकोर्ट प्रथम क्योंटर होता फास्ट कलकाता ये एक्ट अनुसार फास्ट आसला आईपीसी ठीक अच्छे देन जो नेक्स्ट क्वेश्चन Sir Maurice Care was its first Chief Justice, hence option D is the correct answer. The Federal Court of India was established in which year? Option A 1935, option B 1946, option C 1939, option D 1947. तो राइट आंसर टी हो ऑप्शन सी क्वेश्चन देखिए अंडर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स डार्की वाज इंट्रोड्यूस्ड एट सेंट्रल लेवल ऑप्शन ए 1909 ऑप्शन बी 1919 ऑप्शन सी 1935 ऑप्शन डी इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 तो राइट आंसर टी हो ऑप्शन सी 1935 ये एक्ट अनुसार कौन होता ना डार्की आमर जो रही 1919 इंट्रोड्यूस कराइला डार्की आबोलिश कराइला जो प्रोविंस एरिया रे जो प्रोविंस एरिया गुड़िकर डार्की इंट्रोड्यूस कराइला 1919 मसीह से 1935 मसीह कौन होता
ନା ଆବୋଲିଶ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଲେଭେଲରେ ଡାର୍କି ଇଣ୍ଟ୍ରୋड्यूस କରାଯାଇଥିଲା 1919 ଆକ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିଛେ ଆମର ସେପାରେଟ ଇଲେକ୍शन ଫର ମୁସଲିम ଦେନ୍ इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट रे ଆମର ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ଅଲଗା ହେଇଥିଲା ଏବଂ ଭାରତକୁ ସ୍ୱାଧୀନ ମିଳିଥିଲା। ଦେନ୍ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ which of the following acts set up Dyarchy system at the central level double question I think है जाइए which of the following acts set up Dyarchy system at the central level Government of India Act 1935 which act established the Dyarchy system in the made for 16 provinces option A the Government of India Act 1935 option B the Government of India Act 1919 option C the Indian Council Act 1861 option D parliamentary reforms तो राइट आंसर टी जीवो 1919 तो हम देखिथिले 1919 मसीह आउ कोन कोन हेतिला हमर कम्युनल रिप्रेजेंटेशन गुडी को एक्सटेंड कराइतिला कम्युनल रिप्रेजेंटेशन गुडी को एक्सटेंड कराइतिला आउ कोन हेतिला ना हमर हाई कमिश्नर हाई कमिश्नर एस्टाब्लिश हेतिला केउठारे लंडन रे एस्टाब्लिश हेतिला हाई कमिश्नर केउठा ना लंडन रे आउ कोन हेतिला ना हमर सेपरेट हेतिला प्रोविंशियल बजेट सेंट्रल बजेट एवं प्रोविंस बजेट दीटा अलगा हेतिला आउ कोन हेतिला ना हमर पब्लिक सर्विस कमिशन 1926 मध्य मध्य ए एक्ट अनुसार होइतिला PSC 1926 देन जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन 1861 रे तमर एनथिले बजेट आलोचना हेतिला 1861 एक्ट रे पार्लियामेंट्री रिफॉर्म 1909 मुस्लिम मानक पय सेपरेट इलेक्शन हेतिला सेपरेट इलेक्शन तो 1935 एक्ट रे देखिचे आपको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन मध्यम कहा जाए मिनी कॉन्स्टिट्यूशन देन जो नेक्स्ट क्वेश्चन which of the following acts introduced a bicameral legislature at the center option A 1961 option B 1917 option C 1919 ऑप्शन डी 1915 तो यार राइट आंसर हो 1919 एक्ट ये एक्ट रे कौन कौन हेतिला हमर पब्लिक सर्विस कमिशन हेतिला 1926 रे आ कौन हेतिला ना बजेट अलगा हेतिला सेपरेट बजेट हेतिला बजेट सेपरेशन होइतिला प्रोविंस रे गोटे हेतिला एवं सेंटर रे गोटे हेतिला आउ कोन हेतिला ना हमरो एस्टैब्लिश हेतिला बाइकैमरल लेजिस्लेचर अपर हाउस लोअर हाउस बाइकैमरल legislature then your next question by which of the following acts the system of a chamber of princes with 120 members was created option A act of 1919 act of 1909 act 1793 option D charter act of 1853
तो यार राइट आंसर हो एक्ट ऑफ 1919 1919 आम सब एनालिसिस करिचे सेपरेट बजेट होता प्रोविंस रे गोटे स्टेट रे गोटे सॉरी प्रोविंस रे गोटे सेंटर रे गोटे आ कोन होता पब्लिक सर्विस कमिशन होता 1926 रे आउ कोन होता हमर एस्टाब्लिश पब्लिक सर्विस कमिशन आउ कोन होता ना एक्सटेंड कराइला आमर कम्युनाल रिप्रेजेंटेशन जो सब आमर कम्युनिटी गुड़िकर जे कम्युनिटी गुड़ी रिप्रेजेंट करुले जो मेंबर माने बा जो हेड माने से मेंबर को एक्सटेंड कराइला बा बढ़ाइला एक्ट ऑफ 19 मरलेमेंटो रिफॉर्म मुस्लिम मानकर सेपरेट इलेक्शन तो राइट आंसर हो एक्ट ऑफ 1919 नेक्स्ट क्वेश्चन in which year the last election of Indian legislature under the Government of India Act 1919 was held? Option A 1930, option B 1945, option C 1934, 1947. तो राइट आंसर हो ऑप्शन बी 1945. नेक्स्ट क्वेश्चन the power of president to issue ordinance is a relic of आमर प्रेसिडेंट्स को पावर दि जाता ऑर्डिनेंस देवाई बा तांकर पावर को इमरजेंसी टाइम रे ऑर्डिनेंस दे पारे प्रेसिडेंट्स एटा क्यों एक्ट अनुसार होइतिला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 1935 1909 1947. तो राइट आंसर हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 1935 एक्ट अनुसार आउ कौन कौन होइतिला हम डिस्कशन करिचे कौन कौन होइतिला ना हमर प्रोविंशियल एरिया गुडी करे शासन कर परिबे आउ कोन होइतिला एई एक्ट अनुसार गोटे इंपोर्टेंट मन रखिबे हमर म्यांमार को अलगा करा होइतिला केबे ना 1937 मसिया रे म्यांमार हमठार अलगा होइतिला एवं एही एक्ट मध्य इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो ब्लूप्रिंट मध्य कहा जाए ब्लूप्रिंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ठीक अच्छे जदि हम देखा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 रे हम तो जानी आमर डार्की सिस्टम को इंट्रोड्यूस कराइला आमर प्रोविंस गुड़िकर आउ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 मुस्लिम मान सेपरेट इलेक्शन इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट रे पाकिस्तान भारत रो अलग होइतिला एवं इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस केबे 1947. देन जो नेक्स्ट क्वेश्चन the distribution of power between center and states in the constitution of India is based on which of the following plans? Option A Parliamentary reform, option B Montagu-Chelmsford, option C Government of India Act 1935, option D India Independence Act 1947. तो राइट आंसर हो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. हमर सेंटर आउ स्टेट मध्य पावर सेपरेशन होइतिला ए एक्ट अनुसार मल्लेमिटो देखी आम सेपरेट इलेक्शन मुस्लिम मानकर मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड मध्य हम देखी डार्की सिस्टम इंट्रोड्यूस होता प्रोविंस गुड़िकर डार्की इंट्रोड्यूस प्रोविंस एरिया गुड़िकर एवं पब्लिक सर्विस कमिशन रो आरंभ होता केबे 1924 रे ए एक्ट अनुसार एवं इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट मध्य भारत स्वाधीन होता एवं भारत पाकिस्तान अलग होता क्यों एक्ट अनुसार 1947 एक्ट अनुसार. आउ गोटे इंपोर्टेंट मन रखा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रे म्यांमार अलग होता भारत ठारू केबे 1937 रे. देन जो नेक्स्ट क्वेश्चन one among
The following was not a salient feature of the Government of India Act 1935. କେଉଁଟା ଗୋଟେ salient feature ନୁହେଁ. The Act provided for an all India federation. Residual subjects were allocated to provincial legislature. It marked the beginning of the provincial autonomy. It abolished Dyarchy at the provincial level and introduced it at the center. तो केउंटा नुहे कहिछि नॉट कहिछि तो केउंटा हबनी. The act passed provided for an all India federation. ठीक अछि. C ठीक अछि. It marked the beginning of the provincial autonomy. ठीक अछि. D abolished Dyarchy at the provincial level. ठीक अछि. एटा ठीक अछि. तो हबनी कोटा एटा. एटा हबो राइट आंसर. तो देन दिबे नेक्स्ट क्वेश्चन. Which among the following introduced the provincial autonomy in British India? Provincial autonomy के इंट्रोड्यूस करथिले ब्रिटिश इंडिया रे? कैबिनेट मिशन, साइमन कमिशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 किए करथिले? तो राइट आंसर हे जिवो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. आमर प्रोविंशियल गुड़िकर शासन क्षमता 1935 एक्ट अनुसार दि जाइथिला. कैबिनेट मिशन केबे आइथिला? साइमन कमिशन केबे आस्थिला? दीटाको कमेंट करिवे आपण. केबे आस्थिला कैबिनेट मिशन? आमे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट डिस्कस करिवा. एठरे वुमेन मानकू भोट देवार अधिकार दिया जाइथिला केउ एक्ट रे? 1919 एक्ट रे. आउ कोन हेतिला? हमरो एस्टैब्लिश हेतिला पब्लिक सर्विस कमिशन केबे? पब्लिक सर्विस कमिशन 1926 रे. आउ कोन हेतिला ना हमरो हाई कमिशनर फॉर इंडिया, हाई कमिशनर फॉर इंडिया एस्टैब्लिश कराइतिला केउंडे ना लंडन रे. लंडन रे. आउ कोन कोन हेतिला ना सेपरेट हेतिला कोन ना हमर बजट प्रोविंस एवं सेंटर रो बजट जो रहितिला ता सेपरेट हेतिला केउ एक्ट रे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 रे, 1919 रे. तो कैबिनेट मिशन केबे आस्थिला हमरो? 1946. साइमन कमिशन 1928. नेक्स्ट क्वेश्चन जो. A federal system and Dyarchy at the center was introduced in India by केउ एक्ट अनुसार फेडरल सिस्टम टी हमरो इंट्रोड्यूस होइतिला. फेडरल एवं Dyarchy सेंटर इंट्रोड्यूस कराइतिला. द एक्ट ऑफ 1909, द एक्ट ऑफ 1919, द एक्ट ऑफ 1935 ना केउंटी नुहे. तो राइट आंसर टी कोन हे जिवो? द एक्ट ऑफ 1935 कोन हेतिला? सेंटर लेवल रे हमरो Dyarchy आउ फेडरल सिस्टम इंट्रोड्यूस कराइतिला. एवं प्रोविंस रे 1919 मसिया रे जो Dyarchy हमरो इंट्रोड्यूस हेतिला, Dyarchy इंट्रोड्यूस हेतिला केउंटी ना प्रोविंस रे. 1935 रे कोन हला सेटा ना हमर सेंटर को आसिला एवं सेटा प्रोविंस रे अबोलिश करा हेतिला केबे ना 1935 रे. एवं फेडरल स्ट्रक्चर व फेडरल सिस्टम इंट्रोड्यूस मदे हेतिला 1935 एक्ट रे. एवं म्यांमार को मध्य अलगा करा हेतिला केबे ना 1937 रे म्यांमार को एही एक्ट अनुसार. ठीक अछि. तो 1909 रे तो हमर सेपरेट इलेक्शन हेतिला मुस्लिम मानकर, सेपरेट इलेक्शन मुस्लिम मानकर. आ कोन हेतिला ना जे हमर सेंट्रल काउंसिल रहितिला सिथिरे जो मेंबर थिले 16 रु 60 को वृद्धि करा जाइतिला. केउ एक्ट अनुसार 1909 एक्ट 16 टू 60 कर दिया जाइतिला ए एक्ट अनुसार. तो देन जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन. तो राइट आंसर कोन हे जिवो? द एक्ट ऑफ 1935. The provision for the establishment of all India
Federation was included in the provision for establishment of all India Federation. Discussion କରିଛନ୍ତି ଆମେ क्वेश्चन टू तो राइट आंसर कौन हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 अगस्त 4 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 कैबिनेट मिशन तो राइट आंसर हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 1919 कौन होता आमर जो बजेट रही प्रोविंस एवं सेंटर गुड़िकर से गुड़िक अलग होता सेपरेट बजेट होता 1919 सेपरेट बजेट सेंटर एंड प्रोविंस गुड़िकर सेपरेट बजेट होता के 1919 एक्ट अनुसार आउ कौन होता पब्लिक सर्विस कमिशन आसला के 1926 पब्लिक सर्विस कमिशन तो कैबिनेट मिशन प्रपोजल 1946 तो हेनी तो राइट आंसर हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 नेक्स्ट क्वेश्चन जी व्हाई इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इम्पोर्टाट कहीं इम्पोर्टाट आमर रोची गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इट इज द मेन सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया It gave independence. It envisages partition of India. It abolished native states. It gave independence to India. एटा तो देई नथिला एटा देइथिला हमरो 1947 गवर्नमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस एक्ट एटा तो पार्टीशन ऑफ इंडिया बिल्कुल भी कर नथिला एटा हमरो करथिला 1947 टा abolished the native states एटा तो बिल्कुल कर नथिला तो राइट आंसर हो इट इज द मेन सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यहाँ मध्य मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाए मिनी कॉन्स्टिट्यूशन आ कौन कह जाए ना ब्लू प्रिंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ब्लू प्रिंट ठीक अच्छे तो देन जो नेक्स्ट क्वेश्चन Which one of the following acts led to the separation of Burma from India? डिस्कस करछन्ती हम ए क्वेश्चन टी तो एहर राइट आंसर कोन हिजो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 1909 एक्ट रे हम देखिले कोन हिजी 1909 रे सेपरेट इलेक्शन फॉर मुस्लिम आ कोन हिजी इंडिया रे मध्य वाइसरॉय रहि पारे से समय रे मध्य ए एक्ट अनुसार कह जायथिला इंडिया रे वाइसरॉय मध्य रहि पारे इंडियन वाइसरॉय आ कोन हितला एही एक्ट अनुसार फादर ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का कह जाए फादर ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन मिंटो मल्ले मिंटो से जो रही मिंटो को फादर ऑफ कम्युनलिज्म कह जाए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 डिस्कस करछे एही एक्ट अनुसार महिला मानक भाई प्रथम भोट देवार अधिकार मिलिथिला आ कोन हितला कम्युनल रिप्रेजेंटेशन गुडी को एक्सटेंड कराइदिला 1919 एक्ट अनुसार इंडिपेंडेंस एक्ट तो आमर भारत को स्वाधीन करथिला स्वाधीनता भारत पाकिस्तान को अलग करथिला इंडिया एंड पाकिस्तान को अलग करथिला कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 तो राइट आंसर हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 नेक्स्ट क्वेश्चन जी by which act the British Parliament had abolished the monopoly of East India Company's trade in India except tea and China trade तो आंसर कौन हो ऑप्शन ए चार्टर एक्ट 1813 1833 1853 1873 तो राइट आंसर कौन हो चार्टर एक्ट 1813 यही एक्ट अनुसार कहुला जे भारत में ईस्ट इंडिया कंपानी जो मोनोपोली रही से गुड़ आबोलिस्ट करते एवं जो चार जो ट्रेड रही केवल इंडिया रे से भाव कंटिन्यू रहा डिस्कसन होता एवं चाइनार ट्रेड उपर डिस्कसन कर एक्ट अनुसार आउ कौन होता यही एक्ट अनुसार विदेशी कंपानी गुड़िकर आगमन होता
एवं ईस्ट इंडिया कंपनी शिक्षा 1 लाख खर्च करथिला। यही एक्ट अनुसार 1 लाख केवल खर्च करें एजुकेशन रे ये एक्ट अनुसार कहला। आउ 1833 एक्ट अनुसार कौन कहला ना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी टोटाली जो पावर बा राइट्स रही टोटाली समाप्त कर आउ कौन होता 53 1853 एक्ट कौन होता ना ये एक्ट अनुसार लॉ कमिशन आसला एवं यही एक्ट अनुसार किभली भाव जॉब पाई एग्जाम कंडक्ट कर डिस्कसन होता यही एक्ट अनुसार। तो 1873 एक्ट अनुसार कौन होता आमर 1873 एक्ट नुहटा 1861 एक्ट जदि हम देखा गोटे इम्पोर्टाट रही कौन ना फास्ट हाईकोर्ट होता 1861 एक्ट अनुसार मुंडे कोलकाता रे एवं यहीटारे कौन डिसेंट्रलाइजेशन 1861 एक्ट अनुसार कर डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक अच्छे तो राइट आंसर कौन हो चार्टर एक्ट 1813। नेक्स्ट क्वेश्चन जा व्हिच एक्ट ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट abolished the ईस्ट इंडिया कंपनी मोनोपोली ओवर ट्रेड इन चाइना सॉरी ट्रेड इन इंडिया। द चार्टर एक्ट ऑफ 1813। तो ये क्वेश्चन आपण होमवर्क रोचे इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स रिलेटेड टू स्पेंडिंग बा इंट्रोड्यूस करथिले टू स्पेंडिंग 1 लाख फॉर एजुकेशन 1813 33 53 1858 एक्ट। तो यार आंसर टी कमेंट करेंगे तो वीडियो को एंड करवा नेक्स्ट पार्ट रे ये बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन आने। धन्यवाद।